children, I hope you all are good. Today in the GK we are going to discuss chapter number 20. And what's the name of the chapter? Famous First. It means we are going to discuss about those personalities who have done some achievements at the very first time. So they were the dedicated and determined people. They set an example for others in their chosen fields. Their efforts and their achievements won them many laurels and they became famous. तो फेमस फर्स्ट है वो, उन्होंने बेटा कोई भी काम किया होगा ना, तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने ही वो अचीव किया है. उसके बाद बेशक उन्होंने जो एक सेटअप कर दिया ना, उसको अचीव कर रहे हैं, दूसरे लोग फॉलो कर रहे हैं. तो फर्स्ट टाइम अचीवर्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. चूज द करेक्ट अचीवर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच अचीवमेंट. सो फर्स्ट देखो आप, द फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर. सबसे पहले स्पेस में कौन गए थे? यूरी गगैरिन और रॉबर्ट वॉलपोल. यूरी गगैरिन इज द करेक्ट आंसर. देन फर्स्ट विमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, दैट वाज जुंको तबेई. जुंको तबेई सबसे पहले गई थी. Then the first man to reach the South Pole. साउथ पोल पे सबसे पहले रॉल्ड एमंडसन पहुंचे थे. After that the first man on the moon. मून पे पहला पांव किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने. वेरी करेक्ट. Now the next, the first cricketer to score 100 international century in test and one day cricket also. Who is he? The famous Sachin Tendulkar. And the first Chinese traveler to visit India and leave the record. सबसे पहले जो इंडिया आए थे ना, चाइना से ट्रैवल करके गए, इंडिया के बारे में जाना और वो रिकॉर्ड रख के भी गए कि इंडिया में क्या क्या है. That was Fayan. Then the first woman to become a prime minister, she was Sirmo Bendranike. Then the last, the first president of USA, United States of America, and he was the great George Washington. So in this way, I hope you have done the exercise. Learn it carefully. Now moving to the know it. Know it, Florence Nightingale. ये एक नाम आपको दिया ना बेटा. She was the first person to establish the profession of nursing. आज आप इतना देखते हो ना, नर्सेज हैं जो हमारी केयर करती हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स की केयर करती हैं. So she has established first time. She nursed the wounded soldiers of the Crimean War 1853 to 56 and was lovingly nicknamed द लेडी विद द लैम्प. लोगों ने प्यार से उन्हें ये नाम दिया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, द लेडी विद द लैम्प. सो बेटा नाउ इट्स योर टर्न. लर्न दिस चैप्टर केयरफुली.